Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning. In our previous class, we have almost completed the lesson. If you have watched the video or you have attended the live class, we have completed this lesson number 4, and we had to discuss the question and answers of this lesson. But before discussing the question and answers of this lesson, first of all, I should make a recall of whatever means main important things we have understood in this lesson. So first and foremost thing, we have understood the differentiation between climate and weather. Now in this we have understood that what is climate? It refers to the sum total of, that is the sum total of weather condition, whatever weather conditions are prevailing over a large area. जो बड़े एरिया में जो वेदर कंडीशंस हैं और वो लॉन्गर पीरियड के लिए मींस मोर देन 30 years वी कैन एक्सपेक्ट कि वो सिमिलर रहती हैं वो कंडीशंस वेदर कंडीशंस दैट इज रेफर टू एज क्लाइमेट. तो ये एक तो सम टोटल ऑफ वेदर मीन्स पूरा जितना भी वेदर के जो कंडीशंस है एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो एक तो लॉन्गर पीरियड के लिए काम रहते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहते हैं टाइम पीरियड. प्लस सेकेंड थिंग इज on the large area we will see particular point of view particular means area के लिए ना देख करके पूरा large area हम इसको cover करेंगे climate देखने के लिए. And weather refers to what is weather refers to, weather refers to the state of atmosphere over a area at a point of time. अब ये weather क्या है? एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, एक पर्टिकुलर एरिया में है, मीन्स रीजन दिया गया है, प्लस उसमें एट प्रेजेंट उस टाइम ऑफ मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम एक मेंशन किया जाता है कि इस समय क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. तो वो हम वेदर के लिए डेफिनेशन के लिए लेते हैं. तो क्लाइमेट ओवर लार्ज रीजन प्लस फॉर द longer period of time, whether for a specific at point of time and at means particular over particular area. तो ये वेदर और क्लाइमेट का मीनिंग समझ में आ गया आपको. नाउ नेक्स्ट, now what is the climate of India? Then we have understood clearly about the climate of India. That is, what type of climate India is having? It is a monsoon type of climate. In Asia, this type of climate is found mainly in south and southeast. Now, this monsoon type of climate is mostly found in south and southeast. Means the southern part plus southern eastern part of this Asia. Despite overall unity in general pattern, there are specific regional variations. Now we say that it is monsoon type, but regionally एक particular area state wise आप देखेंगे तो कहीं ज़्यादा monsoon है, कहीं कम है, कहीं बिल्कुल ही नहीं है. तो we have seen in the context of Rajasthan that it touches means where it is very much hot, 50 degrees Celsius temperature reaches, and whereas in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where we move higher in the altitudes, the uh, temperature decreases, that is 20 degree Celsius. Then further in this only about the rainfall also different variations we have seen. State to state the variations differ. That somewhere we get annual precipitation, that is rainfall in very much amount, that is in Meghalaya less than 10 centimeter in Ladakh, whereas लद्दाख में तो कम है, राजस्थान वेस्टर्न राजस्थान में कम बारिश होती है. बट जो मेघालय और ये जहाँ पर है और कोस्टल एरियाज में यहाँ पर बारिश ज़्यादा देखने को मिलती है. नाउ वी हैव फर्दर सीन अबाउट द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स also. Now which are the climatic controls? We see latitude, how they are responsible in controlling the climate of India. That is latitude, the latitudinal position. ये भी solar energy receive करती है. I had made it very much clear that whichever latitudes are in front of the sun, they receive more energy, more solar energy than the other latitudes, as it is the earth is in the curvature form. So when the earth is in the curvature form, the latitudes just in front of the sun will get the solar energy more than the latitudes in the poles near the
पोल्स, तो इसीलिए वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। एंड नियर द इक्वेटर विच इज स्ट्रेट अवे, नियर द इक्वेटर वी कैन से ट्रॉपिक्स ऑल्सो, वी कैन कवर ट्रॉपिक्स से होते होते फिर जब वो टेम्परेट की तरफ और पोल्स की तरफ जाता है तो नेचुरली द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। एंड देन एल्टीट्यूड ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। व्हेन एल्टीट्यूड मीन्स the height. When the latitude matters in the climatic controls, then altitude also is responsible for the climatic controls. That altitude, as you go higher and higher, then we can say that the temperature, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. And thus we can say that during the summers, mostly people want to go in hilly areas because they find there that the temperature is suitable during the summer season, and then they can enjoy their natural beauty over there. Then the pressure and the wind system also of any peak area depend on the latitude and altitude of the place. Means at what position that particular place is, the altitude, that is the height and the latitudinal position of that does influence the and temperature and rainfall pattern. Means वो कहाँ पर है रेनफॉल पैटर्न उसी पे। अब हमने देखा कि वो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से कैरी होती हैं मॉइस्चर लेके, विंड्स जो है विंड लेडेड विंड्स मॉइस्चर लेके जो कैरी करती हैं, वो स्टार्ट करती हैं कहाँ से, अपने वेस्टर्न घाट से, फिर वो अंदर की तरफ जाके, तो इट डिपेंड्स ऑल इन द प्रेशर एंड विंड सिस्टम कि what position is that particular area is means according to the latitude and altitude. Then we have further seen about the distance from the sea also. Yes, the same way distance from the sea, that as we go interior of the country, we will find the means moderating the temperature is decreased and all. तो वहाँ पर हम excessive heat भी देखेंगे, excessive extreme weathers देखने के condition में कोल्ड भी वहाँ पर ज्यादा ही देखेंगे। And near the coastal areas, near the sea, the temperature is moderating, means वहाँ ज़्यादा effect नहीं पड़ता because of the presence of the sea. The water takes time to cool down and to become hot also. So जब तक वो cool down और hot होने में time लेता है, तो वहाँ पर वो एक तरीके से balance एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती हैं। और कंपैरिजन टू हम देखते हैं कि एज वी गो इंटीरियर दिल्ली वगैरह की तरफ जाके हम देखते हैं तो वहाँ पर लैंड है, दे आर फार अवे फ्रॉम द सी, देन देर वहाँ पर लैंड जो है टेक्स quick time to get heated also and quick time to get cool down also। तो यही कंडीशन रहती है, इसीलिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के लिए। Then ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. The ocean currents जो है, warm ocean currents and cold ocean currents, they are flowing past, will be warmed and cooled down or if the winds are onshore, winds को warm और cool करते हैं और उसके जो रिलेटेड एरियाज हैं, रीजन्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलता है। Then the relief also to plays a major role. Relief means what type of land is there. That is whether they are high mountainous areas or they are on the leeward side. Leeward side means mountain है उसके back side में अगर कोई region आ रहा है तो वो अगर rain जो विंड्स मॉइस्चर कैरी करती हैं, अगर बीच में ये माउंटेन्स वगैरह का आ गया है बैरियर एक तरीके से, देन दे द रीजन्स विच आर एट द लीवर्ड साइड, जो लीवर्ड साइड मीन्स उसके बैक साइड में जो माउंटेन एरियाज के बैक साइड में जो रीजन्स है उसको कम से कम रेनफॉल वहाँ पर होती है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इन द the high mountains act as a barrier for cold and hot winds. And high mountains, we can say the example of that Himalayas also. The in Asia, we see that the cold winds that are carried from there, they means these high mountains of Himalaya form a type of barrier, बीच में barrier आ जाता है ताकि वो एकदम direct cold winds इतना कोल्ड टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर अपने इंडिया को अफेक्ट नहीं करता, बट हिमालयस के इधर थोड़ा सा हल्का मीन्स कोल्ड रहता है वेदर, बट इतना भी नहीं कि मीन्स इट इज
not we are not able to means bear them. Then factors affecting India's climate. Same way factors are affecting these same factors, similar factors are there which are affecting the India's climate also. That is latitude. Latitude, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country as India means in the middle of the country of India, the Tropic of Cancer passes. And if the Tropic of Cancer passes means at that place near the tropic is very hot and from the run of Kutch in west to Mizoram in the east, and almost half of the country lying south of Tropic of Cancer belongs to the tropical area. तो आधी से ज़्यादा जो कंट्री है इंडिया की वो कहाँ पर है साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो ट्रॉपिकल एरिया को बिलोंग करती है एंड दैट इज वाई वो वहाँ पर हॉट टेम्परेचर देखने को मिलता है ऑन ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक और जो नॉर्थ की तरफ जो जाते हैं दूर जैसे जैसे ट्रॉपिक्स को ट्रॉपिक से हटते हुए थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सब ट्रॉपिक्स मीन्स सब ट्रॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी मेड यू क्लियर द बाउंड्री ऑफ ट्रॉपिक एंड द टेम्परेट जोन उसके बीच में जो एरिया है वो सब ट्रॉपिक एरिया है और देयरफॉर वी कैन से दैट इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टराइज्ड ऑफ ट्रॉपिकल मीन्स वो ट्रॉपिकल एरिया है सर्दर्न पार्ट जो नियर द ट्रॉपिक्स है प्लस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दोनों तरह की क्लाइमेट यहाँ पर मिलने को मिलती है फिर altitude also we have seen that as we go above means above the sea level और higher जाते हैं तो वहाँ पर temperature decrease होता जाता है and Himalayas prevent the cold winds from the Central Asia. This only example I had given here that हिमालय जो है वो कोल्ड विंड्स जो सेंट्रल एशिया से बहुत आती है कोल्ड विंड्स होती हैं वो एंटर नहीं हो पाती हैं यहाँ पर इंडिया की तरफ इट इज बिकॉज दीज माउंटेन दैट दिस सबकॉन्टिनेंट मींस comparatively milder winters as compared to Central Asia. Central Asia के कंपैरिजन में जो यहाँ पर कंडीशन रहती है विंटर की या कोल्ड सीजन की वो बहुत लेस रहती है मतलब ये टॉलरेटेबल होती है then pressure and winds also we have seen pressure in the surface winds upper air circulation कैसे यहाँ से मीन्स सन रेज से यहाँ पर गर्म होती है जब winds hot winds blow and they move upward that is the upper air circulation और जैसे जैसे वहाँ का टेम्परेचर लेस होता है डिक्रीज होता जाता है तो वो वहाँ पर जाकर के सेटल डाउन होती है या पेनिट्रेट हो जाती है दूसरे रीजन में तो दैट इज कॉल्ड अपर एयर सर्कुलेशन एंड देन western cyclonic disturbances and tropical cyclones also these helps in the variation of the this climate and temperature. Then we have also read about this Coriolis force, that is, it is an apparent force. It is a natural force caused by the Earth's rotation. ये cause होता है Earth rotation की वजह से the Coriolis force is responsible for deflecting winds. और इस Coriolis force की वजह से winds जो हैं अपना जो इनका रहता है वी कैन से द वे द पाथ वो डिफ्लेक्ट हो जाता है चेंज हो जाता है एंड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर दिस इज नोन एज द फेरेल्स लॉ आल्सो जैसे ही विंड्स यहाँ जाती हैं और कोरोलिस फोर्स जब कोरोलिस फोर्स एक्ट करता है तो ये विंड्स जो आती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ एंड टुवर्ड्स द साउदर्न हेमिस्फीयर बट वो उसी एरिया में ट्रॉपिक्स के पास ही ये विंड्स रोटेट होती रहती हैं then India's jet streams also we have seen that these are the narrow belt of high altitude above 12,000 meter westerly winds in the troposphere अब troposphere में ये high altitude पे ये jet streams होती हैं and it is a narrow belt jet streams are the narrow belt whereas एक और हमने देखा था they are the means this El Nino and all periodic development of warm ocean currents along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current intertropical convergence zone ये हमने देखा था तो ये है broad trough low pressure in equatorial latitude अब jet streams हैं narrow belt और in the
कहाँ पर है? हाई एल्टीट्यूड। जेट स्ट्रीम्स नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड में, एंड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर, whereas the difference of this intertropical convergence zone, it is a broad draw, चौड़ा एक पाथ है, एक वी कैन से चैनल है ऑफ लो प्रेशर इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, इक्वेटोरियल रीजन दैट इज नियर द इक्वेटर्स। जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पर एक ब्रॉड पाथ बना हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, एंड दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। यहाँ पर जो ये एरिया है नियर द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, वहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो ट्रेड विंड्स है वो कन्वर्ज होती हैं। दैट मीन्स द नॉर्थ ईस्ट विंड्स आर मूविंग, द साउथ ईस्ट विंड्स आर मूविंग, एंड फिर वो कन्वर्ज होती हैं। मीन्स वो जाती तो हैं इक्वेटर के तक, but again they turn back to their own area, own position। मीन्स वो क्रॉस नहीं करती हैं इक्वेटोरियल रीजन को, बट वो अपने नॉर्थ नॉर्थ की तरफ रहती है, साउथ साउथ की तरफ, बट वो कन्वर्ज होती हैं एक तरह से आपस में, नियर आती आकर के वापस से वो डाइवर्शन ले लेती हैं। Then we have seen about western cyclonic disturbances, that they are weather phenomena of winter months। Winter months में ये western cyclonic disturbances होती हैं, और they usually influence the weather of the north and northwestern region। An example we have seen that tropical cyclones during the monsoon, the Odisha and Andhra Pradesh coast. These the destruction was made due to the western cyclonic disturbance in Odisha and Andhra Pradesh. Then these mechanism of monsoon, the following facts are important for the mechanism of monsoon. That the differential heating and cooling of the land and water. That already I had made it clear that land takes means quick time for getting heat up also and for cooling down also. Whereas water takes uh, means much time as compared to the land. So it creates low pressure on the land mass. Land mass में low pressure हो जाता है of India, while the sea around experience comparatively high pressure। क्योंकि यहाँ से जब वार्म होता है वाटर, तो वहाँ से क्या बनता है, वो हाई प्रेशर बनता रहता है, और फिर लैंड जब जल्दी से हीट अप होती है तो वहाँ से लो प्रेशर बन करके, और जब विंड मूव करती है तो उसके अकॉर्डिंग वो आता है नीचे विंड सिस्टम। Then the shift of position of intertropical convergence zone, that's ITCZ, in summer over the Ganga plain. That ITCZ we have already understood here in this what is it? It is a low pressure in equatorial latitude, और ये normally positioned about 5 degree north of the equator। इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में ये एक तरीके से इतना पोजीशन में वो नियर द इक्वेटर ड्रॉ है ये, एंड इट इज आल्सो नोन एज मॉनसून ड्रॉ ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। देन हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन में ये हाई प्रेशर एरिया बनता है मेडागास्कर में। Then Tibetan Plateau gets intensely heated during the summer. Why? Because it is the land area, and that is why it gets intensely heated during the summer. And that this also had in the formation of low pressure over the plateau। जब वो जल्दी heat up होता है तो वहाँ पर low pressure बनता है। Then the movement of westerly jet streams to the north of the Himalayas and the presence of tropical easterly jet streams over the Indian peninsula during the summer। So these are the mechanism how the monsoon means the process of monsoon take place। Then we have read about the onset of the monsoon and withdrawal. That means uh, when the monsoon arrives suddenly, means rainfall, first of all normal rainfall is there, and suddenly it the rainfall increases and it continues for the several days। बहुत दिनों तक वो continuation में चलता रहता है rainfall, and that is called as burst of monsoon। एकदम से burst हुआ monsoon का, that means एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई है। पहले तो थोड़ी सी शुरू होती है बारिश, उसके बाद फिर सडनली एकदम से इंक्रीज इन द
quantity of the rainfall, plus it continues for the several days also. That is called as burst of monsoon. Then we have seen further in this about the season, different seasons. That is cold weather season in winter. We have seen that where it begins with the mid-November in the northern India and it stays till February. And then further, the average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 degrees to 25 degrees Celsius, with while in northern plains it ranges about the 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius. So this we can say that the variation in the temperature is also there within the country in different parts of the states also. That is Celsius days and are warm and nights are cold. Here somewhere we can say that days are warm and nights are cold when the this cold weather season is there. Plus frost is common in the north and higher slopes of Himalaya as altitude matters a lot. So that is why the high altitude where Himalayas are there, they experience the snowfall also during the winter season. Then further, we have seen that the total amount of winter rainfall locally known as Mahavat. So what is Mahavat? You can underline this. Mahavat is a amount of winter rainfall. The winter rainfall is called as Mahavat and it is very important for the cultivation of Rabi crop. Then hot weather season starts from March to May, and then we can say the shifting of heat belt can be seen clearly from the temperature recorded taken during the March, May at the different latitudes, and this can be seen by the if we record the temperatures in different means different months from March to May, temperature variations we can see and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common. So highest temperature is there here. Then we have seen about the local winds that it hot or summer season, which is in the summer season. Loo, we have already read about that they are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. So, what is a loo? It is also the local wind, which is strong, gusty, hot, dry wind, which blow during the day over the north and northwestern India. It is called as loo. Then next, another we have read about Kal Besaki. This is another local wind. According to this, it is a localized thunderstorms. Means lightning and thundering is there, accompanied with violent winds. Accompanied with violent wind is there. Then we can say that rainfall is also there somewhere and sometimes accompanied by hail और कभी कभी hail means वो ओले पड़ते हैं वहाँ वो भी होते हैं और this mostly appears where in West Bengal. So Kal Baisakhi usually we are able to see in West Bengal and it is a localized wind over there and it is in the form of thunderstorms, violent winds, rainfall, torrential rainfall and all. Then another local wind, one more we have understood is about the mango showers. And they are pre-monsoon showers. Mango showers are the pre-monsoon showers and they mostly appear in Kerala and Karnataka. Kal Vaisakhi is in West Bengal, whereas this mango showers are in Kerala and Karnataka. Then this helps in the ripening of the mangoes also. Due to this pre-monsoon showers, ripening of mango is also there. Then further we have seen about advancing monsoon, that is rainy season, coming of the rainy season, and it brings the trade winds from the southern hemisphere. Southeast trade winds originate over the warm tropical areas of the southern ocean and they cross the equator. Warm ocean, southern ocean में से जब अरेबियन सी और इंडियन ओशन में से ये सदर्न ईस्ट ट्रेड विंड्स कैरी होती हैं और क्रॉस इक्वेटर को क्रॉस करती हैं देन दे एंटर टू अ कंट्री westerly direction entering the Indian
पेनिनसुलर एज साउथ वेस्ट मानसून, और इस तरीके से ये साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है हमारे कंट्री में। एंड देन स्लोली स्लोली द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर per hour, the winds are strong and they blow at the average velocity speed होती है 30 किलोमीटर पर hour, and with the expectation exception of extreme northwest the monsoon winds cover the country in about a month। एक महीने में ही ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये पूरे कंट्री को कवर कर लेती हैं। एंड दैट हेल्प्स इन द bringing of the moisture because they are carrying moisture with them, and they help in the rainfall in different parts of the country. Then we have also read about Mausoleum is the southern range in the Khasi Hills, receives the highest average rainfall in the world. Then retreating monsoon. Retreating means the transition season, that going back of monsoon, or we can say October, November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the southern northern plains become weaker। थोड़ी अब धीरे धीरे वो वीक होने लगता है, जो विंड्स मॉइस्चर लेके कैरी किया है, और एक जब बारिश हो गई तब वो विंड्स वीक हो जाती हैं, और देन the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains become weak during October and November. And this is gradually replaced by the high pressure system. The southern west monsoon winds weaken and start withdrawing gradually। धीरे धीरे वो वापस जाने लगती हैं। Then here in this we can see the figure 4.5 that यहाँ से ही अरेबियन सी से ये कैरी हुई हैं, और धीरे धीरे साउथ मीन्स साउथ वेस्ट से ये कैरी होकर के पूरा कवर कर लिया है कौन अपना इंडियन पेनिनसुला, और फिर वापस से ये रिट्रीट हो रही हैं, और स्लोली स्लोली इट इज रिट्रीटिंग। हम ये देखते हैं कि पहले 1 सितंबर टू 15 सितंबर यहाँ पर, और उसके बाद 1 अक्टूबर, देन 15 अक्टूबर, then slowly it is till December, means October and November December में हम देखते हैं कि वो टोटली डिसअपेयर हो गई हैं, और फिर थोड़ा सा विंटर सीजन के हम महसूस करते हैं। Then last we have seen about monsoon or unifying bond. Okay, how monsoon is a unifying bond means coming of the monsoon makes everybody very excited and happy, as it is very much important for the agricultural purpose also, and the Indian landscape, animal, plant life, and the entire agriculture calendar and the life of people, including their festivities, revolve around this phenomena। इसी के आजू बाजू मीन्स मानसून है तो काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं। इवन द एग्रीकल्चरल कैलेंडर डिपेंड्स ऑन दैट कि बारिश कब आएगी तो कौन सी क्रॉप उगानी है। प्लस एनिमल एंड plant life also depends totally on the this rainfall, and after these festivities, all the festival seasons mostly is related to this for the village people on this monsoon season only, and year after year people of India from north to south or from east to west eagerly await for the arrival of the monsoon, or eagerly sub people all of the Indian peninsula north से south तक east से west तक सब लोग इस monsoon season का इंतजार करते हैं। And these monsoon winds bind the whole country by providing water to set agricultural activities in motion। और यही monsoon winds जो होती है ये एक तरीके से whole country को water provide करती हैं to start with the agricultural activities। And the river valley which carry this water also unite as a single river valley unit। Now in our next class we are going to discuss the question answers। Now no recall of the lesson will be there. We will continue with the discussion of the question answers। And before discussing the question answers, I am going to share this the question answers in the group. You can note down in the rough means in your SST notebooks the NCERT questions. You can do it in the notebook and try to submit the notebook work plus uh, subject enrichment activity, art integration activity in time। And if your friends and all also have not submitted, ask them also to submit। Okay, you want to do to the tick the correct answer?
No problem. Okay, first, which one of the following place receives the highest rainfall? Uh, you can answer. Unmute yourself and you can answer if you want. Which of the following place receives the highest rainfall? Guwahati. Ram. Highest rainfall. Just now I had made, I had means highlighted that also. Ram receives the highest rainfall in the world. Ram. Okay. Then the wind blowing in the north plain in the summer season. Lu. Good. Lu. Yes, Lu. Which one of the following causes rainfall during the winters in the northwest part of the north? Retweeting monsoon. Which one of the following causes rainfall during the winters? During the winters. Winters mean Western. western disturbances. Ma'am, there is northwestern mentioned in the question. That's why. Okay, no problem. And then a monsoon arrives in India approximately in Early June. Early June. early June. And then which one of the following characterizes the cold wind season in India? Cool days and Warm day and cold night. cold days and cold night. C. Okay. First is B, second is B, third is C, and fourth is also C, and fifth is also C. Now, question answers we are going to discuss it in means next class that will be on Friday. So Friday we are going to discuss. Till then, read the lesson, start learning the answers because course is very lengthy. So you can start learning the answers. Okay. Till then, take care. Thank you.